Good morning, class 8. How are you all? I hope you all are fine. Today we are starting chapter 17 in our general knowledge subject, that is desert plants, on page number 27. So, in this chapter, we have to fill some blanks using the given clue box. Okay, so here are the clue box. We have to fill these blanks. So, this picture, we have some pictures as well with the clue box. Dash is mainly found in the desert areas of North America. Its bulbs were eaten by natives. यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और इसके जो बल्ब्स होते हैं, यानी कि ये जो यहाँ पर ये इसके पेटल्स के साथ साथ इसके जो बल्ब्स होते हैं उसको जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं और जो वहाँ के जानवर वगैरह हैं वो सब खाते हैं. दैट इज़ डेजर्ट लिली. ओके, द सेकेंड वन इज़ cacti and dash can store water for several months in special water storage organs. It is succulents. Cacti and succulents can store water for several months in special water storage organ. इन फ्लावर्स में स्पेशल वाटर स्टोरेज ऑर्गन होता है, सो वो वहाँ पर वाटर स्टोर करके रखते हैं. बिकॉज डेजर्ट का एरिया ऐसा होता है जहाँ पर वाटर जो है वो बहुत कम मिलता है क्योंकि रेनफॉल नहीं होती वहाँ पर. सो दैट्स वाई जो वाटर है वो बहुत कम अमाउंट में मिलता है. सो इस तरीके से वो उसको स्टोर करके रखते हैं. नाउ हियर द थर्ड वन इज़ the flowers of dash appears at the top and the buds are bright yellow or orange in color. जो इसकी buds होती हैं वो bright yellow और orange color की होती हैं. और जो flower होता है of barrel cactus, this is barrel cactus, वो ऊपर की तरफ, see this is the flower, और ये bright yellow और orange color का होता है इसका flower. किसका? barrel cactus. The fourth one is some plants in the dry desert have long roots. The dash plant has roots which go down as deep as 50 meters. This plant has its roots that goes down deep 50 meters. Its name is mesquite. Okay. Now here the fifth one is some dash and lichens get water by soaking up dew. Some mosses, these are mosses. Okay, some mosses and lichens get water by soaking up dew. वो water को soak कर लेती हैं. Here the sixth one is dash has very sharp spines and have barbs like fish hooks. This is छोला cactus. सी यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी सारे जो स्पाइंस हैं ना, स्पाइंस का मतलब होता है कांटे, छोटे छोटे कांटे, काफ़ी शार्प होते हैं ये, वो हैं यहाँ पर. ओके, here the seventh one is a dash plant has no leaves at all, rather it has spines and occurs in a wide range of shapes and size. This is cactus. सी cactus में क्या काफ़ी सारे कांटे होते हैं. these have spines. इसकी जो leaves होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा broad होती हैं, इनकी डिफरेंट शेप और साइज होते हैं. ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर डेजर्ट एंड प्लांट्स. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फ्रॉम द क्रिकेट ग्राउंड. सो यू ऑल लाइक cricket, most of you like other games as well, but like most of the people like cricket, right? So here we have a cricket pitch, see this, and they have marked some positions as 1 2, they have numbered it, and we have to find out that which position is of which player. Okay, and the name of that player. So here a cricket match is played on an oval shaped field. The rectangular surface in the middle, see this is the rectangular surface in the middle, is called the pitch. This is called the pitch. The pitch contains wickets at each end. यहाँ पर दोनों साइड सी विकेट्स होते हैं और ये रन आउट करने के काम आते हैं, राइट? प्लेस 22 यार्ड्स अपार्ट यू, और ये एक दूसरे से 22 यार्ड्स दूर होते हैं. You already know that there are different fielding positions on cricket field. Let us find out some of those by filling the blanks with the help of given clues. Here we have some clues as well. They have marked it by number and we have to mention the name of these position. So
Here we have a do you know. Cricket originated in England but it won the World Cup for the first time in 2019. यानी कि जो क्रिकेट का मैच था वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था, बट फर्स्ट टाइम इंग्लैंड ने कब मैच जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, दैट इज़ इन 2019. So see, here we have some positions, the very first, and here we have a clue box. इधर यहाँ पर एक और बॉक्स है, यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं. दिस इज़ अ नोट. अपार्ट फ्रॉम बॉलर एंड विकेट कीपर देयर आर only 9 players allowed to field, but to tell various fielding position we have shown many players. Okay, they have shown many players that the जो कि पूरे टोटल गेम में होते हैं और कहाँ कहाँ उनकी पोजीशन होती है, बट बॉलर और विकेट कीपर के अलावा सिर्फ 9 प्लेयर्स और होते हैं जो कि फील्ड पर होते हैं, यानी कि टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, 11. ओके, हियर इज़ द क्लू बॉक्स. वी हैव टू फिल इट लाइक दिस. दे हैव मार्क्ड सम पोजीशंस एंड हियर वी हैव अ box as well. See, this is 30 yard circle. In this circle marked in the middle of the field that separates the infield from the outfield. See, this circle separate this is the infield and this one is the outfield. Okay, so the very first is this position. This is of bowler. Okay, the second position is of, where is the second one, here, this is wicket keeper. Okay, wicket keeper. The third position is of first slip. This is first slip. Now the fourth position is of second slip. This is second slip. Now the fifth position is here. This is of cover. This person covers the batsman, so this is of cover. Sixth is of, this person is at sixth point, that is silly point. Next, the seventh one is this, that is gully. Eighth one is this is point. Now the ninth one is at this position, that is short mid off. Okay, this is short mid off. 10th is mid off. 11th one is this one, that is mid on. Okay, because यहाँ पे जो बैट की साइड है वो इधर वाली साइड आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट्स वाई दिस इज मिड ऑन एंड दिस इज मिड ऑफ. नाउ हेयर द 12th one is this one. The 12th one is mid wicket. This is mid wicket. Okay, now the 13th one is this one. The 13th one is forward short leg. The 14th is this one here. This is long off. The 15th one is this one. This is long on. The 16th one is this one, that is deep mid wicket. The 17th one is this, deep square leg. The 18th one is this one, fine leg. And the 19th and the last one is the third man. Okay, so this was about cricket and the positions on cricket field ground. So this is it for today's class.